Hello students, we are discussing human blood circulatory system and we discussed about the structure and working of human heart. Now let's discuss some more important terms related with human blood circulatory system. Out of this, let's start with the first term, that is heart rate. What is heart rate? As I already told you in the previous video that heart beats 70 times per minute. What is heartbeat? The rhythmic contraction and relaxation of the heart is known as heartbeat. जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, to transport the blood or to send the blood out of the heart chambers contract, इनमें contraction होता है, and after contraction they get relaxed to receive the blood. So this continuous rhythmic contraction and relaxation of the heart is known as heartbeat, and the number of heartbeats per minute is known as heart rate. So we can say number of heartbeats per minute known as heart rate, and the amount of this heart rate is 72 beats per minute. The heart rate is 72 beats per minute, or we can say the heart rate is 72. So this is the heart rate during the normal rest position. When person is in the rest phase, that is the heart rate. When we measure it like in 72 beats per minute. During the exercise, fever or any another emotional conditions, the heart rate get changed. It can be increased. ये increase हो जाती है जब आप कोई physical work कर रहे हैं, like exercise कर रहे हैं, when you are playing or you are emotionally you are depressed or you are in excitement stage, then we can say that heartbeat get changed. It can be increased. So this is about the heart rate. And next that term that we will discuss is the pulse. Pulse is the wave of distension of the wall of the arteries. You know that to transport the blood, the ventricles get contracts. Ventricles contract होंगे. We already studied the complete circulation process. This part of the heart is the left part. This is the left atrium which receive oxygenated blood, and then atrium contract. After contraction, the blood is transported to the left ventricle. यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द मेन आर्टरी दैट इज एओर्टा. एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होगा. व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेंड द ब्लड इनटू द एओर्टा एंड another arteries which are related with the aorta. आगे जाके एओर्टा के साथ बाकी आर्टरीज कनेक्टेड रहती हैं. जब उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ventricles, then this blood make a jerk on the walls of the arteries, or we can say that it create a force on the wall of arteries. Let's see how it is. We will try to understand it, then we will discuss what is this. Suppose this is our artery. This is our artery and blood is present inside the arteries, and it comes when ventricles contract. So ventricle will contract, ventricle contract होंगे, और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो ब्लड है वो आएगा आर्टरीज के अंदर. जब आर्टरीज के अंदर ब्लड आ रहा है, व्हेन इट इज फ्लोइंग, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम कंडीशंस, देन वी विल can explain what is the pulse. So in first condition we say that ventricles contracts and blood is pumped inside the arteries. In the next condition we will say that ventricles get relaxed. अब क्या होगा, ventricles एक बार contract करेंगे, उसके बाद ventricles relax करते हैं. So in the next conditions ventricles will relax. Ventricles will relax. ये relax हो जाएंगे. जब ventricles relax होंगे तो यहाँ पे अभी कोई नया blood नहीं आ रहा है. Means blood is now not supplying inside the arteries. Now third condition which will have that again ventricles will contract. फिर से ventricles contract होंगे. When these ventricles will contract, it sends the blood inside the arteries. ये arteries में फिर से blood send करेगा, and arteries have already blood. क्योंकि पहले वाला यूनियन के पूरा का पूरा blood artery से खाली हो जाता है. It already have blood. पहले से इसके अंदर blood है, but again when the new blood is coming, the fresh blood is coming from the left ventricles, then this blood make a force. ये एक force create करेगा arteries के अंदर आने के बाद. And arteries have flexible wall. इनकी जो walls होती हैं वो flexible होती है और elastic होती हैं. उस elasticity की वजह से these walls of the arteries will show some distension. यहाँ पे एक तरीके से एक jerk feel होता है, and that jerk
or on the walls of the arteries is known as pulse. This is the pulse. And when we feel this jerk, we feel this jerk during the ventricle contraction. The ventricles contract होंगे, उसी टाइम पे आर्टरीज की वॉल के ऊपर एक jerk, एक force feel होता है, and that force or that jerk is known as pulse. So we can say that wave or distension, the wave of, we can write the definition here. What is pulse? The wave of distension on the wall of arteries during ventricle contraction. This is called pulse. During ventricle contraction, this is called pulse. So this is about the pulse, and we can say that is shown during the ventricle contraction phase. This is about the pulse. Now we will discuss about some more new things. Next thing that we will discuss here is about the heart sound. Let's see, ये क्या होता है heart sound. It's also important topic, heart sound. We already discussed. हमने ये पूरा अच्छे से पूरा सर्कुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हमने कुछ वॉल्स के बारे में पढ़ा था. Both these atriums, upper left side or right side, both these atriums are separated by ventricles, or they are connected by ventricles through wall. Left atrium is connected by the left ventricle, and here the wall that is present is the bicuspid wall. यहाँ पे जो wall present होता है, जो इनको आपस में connect करके रखता है, which control the transportation of blood from atrium to ventricle, that is bicuspid wall. Similarly, towards the right side, the wall which is present between atrium and ventricle is tricuspid wall. वो wall कौन सा था? Tricuspid wall था. ये हमने पढ़ा है. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं heart sound की. क्या होता है heart sound? When both of these atriums get relaxed, they are poured with blood. पहले atriums relaxed condition में है. जब atriums relaxed condition में होते हैं, तो इनके अंदर ब्लड पोर हो जाता है. यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है थ्रू pulmonary veins, that is oxygenated blood, and right atrium is get filled with deoxygenated blood through superior vena cava and inferior vena cava. Both of these two atrium get filled with blood. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, दोनों एट्रियम ब्लड से फिल हो गए. अब क्या होगा, अब एट्रियम को ब्लड सेंड करना है वेंट्रिकल्स को, सो दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे. व्हेन दीज एट्रियम्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एट दैट टाइम दिस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल गेट ओपन. ये वॉल जो है ओपन हो जाते हैं, सो दैट द ब्लड कैन कम्स टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, ताकि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में फिल हो सके. इनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में, मींस द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम विल कम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम विल कम टू द राइट वेंट्रिकल. ओके, नाउ ब्लड रीच टू वेंट्रिकल्स. अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर. वेंट्रिकल्स ने ब्लड को रिसीव किया. एट दैट टाइम दे बोथ ऑफ दीज टू वेंट्रिकल्स वर इन रिलैक्स कंडीशन. ये रिलैक्स थे. अब आफ्टर रिसीविंग द ब्लड, वेंट्रिकल्स हैव टू सेंड दिस ब्लड. अब वेंट्रिकल्स को ब्लड सेंड करना है. लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सेंड करना है to all over the part of the body, and right ventricle have to send the blood towards the lungs, so they need to be contract. अब ये contraction करेंगे. During that phase, when the ventricles contract, जब ventricles contract करते हैं, the blood is transported towards these two main veins or arteries. This is the pulmonary artery and this is the aorta. So from ventricles, the blood is transported to the aorta by the left ventricle and inside the pulmonary artery by the right ventricle. And that time the ventricles, when ventricles contract, जब ventricles blood को transport करने के लिए contract हो रहे हैं, उस टाइम पे blood फिर से atrium में fill ना हो जाए, इसलिए bicuspid and tricuspid, both of these two walls, bicuspid and tricuspid, both of these two walls get closed. ये close हो जाते हैं. And at that time the first heart sound is produced due to the closing of this bicuspid and this tricuspid wall during the contraction of ventricles. This heart sound is known as first heart sound, and the sound is lub sound. This sound is lub, or somewhere you can means you can find the lub or lub. Both of these two words are same.
So you can write any one. So at the time of ventricle contraction, first heart sound is produced, that is lump sound. Okay, now these valves are closed and now blood is sent to the pulmonary artery and aorta. यहाँ पे blood को transport कर दिया गया है. After transporting the blood, now ventricles are become relaxed. Ventricles relax हो जाएंगे. जब ventricles relax हो जाएंगे, उस टाइम पे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में फिल ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए द वॉल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दीज पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. यहाँ पे कौन से वॉल बताए थे आपको? द वॉल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. यहाँ जो वॉल्स है वो है हमारे सेमी लूनर वॉल. सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स, the semilunar walls of pulmonary artery and aorta, they also get closed. ये walls भी बंद हो जाएंगे. At that time, due to the closure of these walls, second heart sound is produced and that heart sound is dub sound. इस heart sound को बोलते हैं dub sound और dub sound. So this is the second heart sound. First heart sound is the lub or lup sound. Second heart sound is dub sound or dub sound. This sound is produced during the contraction of the heart, during the contraction of the ventricles due to the closure of bicuspid and tricuspid wall. यह heart sound कब produce हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? Due to the closure of bicuspid and tricuspid wall. And the second heart sound, that is the dub sound, it produced due to the closure of semilunar walls of pulmonary artery and aorta. At that time, second heart sound is produced. That sound is dub sound. So here we studied about the heart rate, pulse and heart sounds. Now let's discuss about one more interesting term, that is blood pressure. अब हम बात कर रहे हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म की, जो है हमारा यहाँ पे ब्लड प्रेशर. इस चीज से सब लोग फैमिलियर है. आपने अपने घर में कभी कभी सुना होगा कि हम एक टर्म बोलते हैं दैट उस पर्सन को बीपी है. What is the BP? BP is the same, the blood pressure. अभी blood pressure क्या होता है? When heart pumps the blood in the body, it creates a force. पूरी बॉडी को हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है, तो उसके लिए हार्ट को एक फोर्स देना पड़ेगा ब्लड को. तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि the force that is created or generated by the heart to transport the blood throughout the body. Here the force is required, and that force that is applied on the walls of the blood vessels is known as blood pressure. So what is the blood pressure? Blood pressure is the force that is generated on the walls of the blood vessels due to the contraction of the heart. That pressure is known as blood pressure. Okay, अब जो blood pressure होता है, ये blood pressure vein से ज्यादा arteries में feel किया जाता है. We can record or we can measure the blood pressure in this arteries and instead of veins. हम arteries में इसको आसानी से measure कर सकते हैं. So let's see what is blood pressure. Blood pressure को हम 2 categories में एक बार divide करेंगे. Blood pressure 2 तरीके का blood pressure होगा. एक होगा systolic blood pressure and second one is diastolic blood pressure. We have 2 kinds of blood pressure, systolic and diastolic. This systolic blood pressure is generated when the ventricles get contract. जब ventricles contract होंगे, contraction की वजह से एक force generate होगा, जिससे पूरे force के साथ जो blood है वो transport होगा towards this main artery, that is aorta. एटा को जब ब्लड सप्लाई करना है तो उस टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन फेज create a pressure. That pressure is known as systolic pressure. So we can write here is generated during the ventricular contraction. ये ventricular contraction के टाइम पे जनरेट होता है. And diastolic pressure is generated when ventricles get relaxed. एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ventricles उसके बाद क्या हो जाएंगे? Relax हो जाएंगे. At that time, the pressure that is generated on the walls of the arteries or on the walls of the blood vessels, this is known as diastolic. So we can write it's the pressure during ventricular relaxation.
So we have two types of blood pressure, that is systolic pressure and diastolic pressure. Systolic pressure is generated during the time when the ventricles contract, and diastolic pressure is generated when the ventricles get relaxed or during the ventricular relaxation. The amount of, or we can say the value of this ventricular contraction is 120 mmHg. जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 120 mmHg and the value of diastolic pressure is 80 mmHg. Here the mmHg is the value, Hg is for the mercury. At the level of mercury we measure this blood pressure, so here we write the value at mmHg. So the systolic pressure is 120 mmHg and diastolic pressure is 80 mmHg in a normal हेल्थी एडल्ट. ये एक नॉर्मल हेल्थी एडल्ट का ब्लड प्रेशर यहाँ पे बताया गया. द ब्लड प्रेशर ऑल्सो गेट चेंज अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन. अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फीवर है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाएगी. और नॉर्मली हम इसको शो कैसे करते हैं, वी राइट इट बाय दिस 120 by 80 means this 120 shows the systolic blood pressure and this 80, this value is for this diastolic pressure. And to measure the blood pressure, the one instrument is used by the doctors. Doctor use one instrument to measure the blood pressure, and the name of this instrument is sphygmomanometer. Sphygmomanometer. This is the name of the instrument which is used to measure the blood pressure. आपने देखा होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे यहाँ पे काफ पे बांधा जाता है और फिर उसके अंदर एयर फिल की जाती है. उसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक स्केल बना होता है, एक लेवल होता है मर्क्यूरी का, जिसके ऊपर रीडिंग को नोट करते हैं. दैट इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज स्फिग्मोमैनोमीटर. बाय दिस डॉक्टर्स कैन मेजर द ब्लड प्रेशर. This blood pressure is the normal blood pressure. If the value of blood pressure is increased or continues, the high value of the blood pressure is known as hypertension. अगर ये blood pressure continuously अगर high रहता है, that condition is known as hypertension. क्यों होता है hypertension? When we continuously intake the oily, greasy food. अगर continuously आप oily food ले रहे हो, these oily food get accumulated or get deposited on the walls of the arteries. arteries की wall पे deposit हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज में से ब्लड का जो फ्लो है वो स्मूथली नहीं हो पाता, एंड द हार्ट हैव टू क्रिएट मोर प्रेशर. एट दैट टाइम द ब्लड प्रेशर वैल्यूज विल इंक्रीज. सो दिस इज द कंडीशन. द हायर अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज नॉन एज हाइपरटेंशन, एंड व्हेन द ब्लड प्रेशर वैल्यू गेट डिक्रीज्ड then we can say is hypotension. So these are the some terms. Okay, here we discuss about the pulse also. One more thing that I want to tell you about pulse. Pulse can be measured at different arteries. Pulse को हम arteries पे measure करते हैं, ये हमने पहले discuss कर लिया. To measure the arteries are not present on the superficial. Arteries होती है वो superficially present नहीं होती. ये हमने arteries और veins के differences में किया था. Arteries जो है वो नीचे present होती है skin के अंदर. So कैसे हम मेजर करते हैं पल्स को? पल्स को मेजर करने के लिए कुछ जगहों पे आर्टरीज जो होती हैं वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं, या ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहां पे हम आर्टरीज में पल्स को फील कर सकते हैं. वन सच काइंड ऑफ आर्टरीज इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट विद दिस थंब. अगर हम अपने थंब के साथ साथ यहाँ पे आके अगर हम 2 फिंगर्स रख के कोशिश करें, इफ वी विल ट्राई, देन वी कैन फील द पल्स. This artery which is present in our wrist is known as radial artery. So we can measure the pulse, or we can feel the pulse in some arteries like radial artery. In the head portion like temporal region also arteries are present. In neck region also arteries are also present, and in ankle also, where we can feel the pulse. So this is about the heart rate, pulse, heart sound, and finally we discuss about the blood pressure. So this is about some important terms. In the next video we will discuss about double circulation. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.